Hey, what's up? Hey, how you all doing this awesome Friday evening? आवाज साफ आ रही है? We're going to do atomic structure today. A lot of very interesting questions from the last few years that have come in NEET. You're able to hear me and see me clearly, right? Let's get that out of the way. I see a lot of familiar faces. Hey, Vani, Saloni, Nehal. Oh, maybe that was before. Provat, Mayuk, Shridula, Lakshya, Radhika, Provat again. Hi, good evening, Hare Krishna. Welcome everybody to this amazing Friday evening session. How you all doing today? Awaz aa rahi hai, right? What happened to the activity on the chat? Give me like a hi, hello, whatever, if to, let me know that you're all here. We're going to get started, and as usual, these PYQ sessions, they're going to be jam-packed. Shall we get started with the first session then? First question then. पहला सवाल है NEET 2021 का. Then this question is right here. Hey, good evening. All good, awesome. Shalini, Biswajit, hello, hello, hello. I'm great. Prabhat, how are you doing? A particular station of All India Radio, Aakash Vani, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. अरे ये तो फिजिक्स का सवाल लग रहा है. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, and speed of light is given. Hey, this is that first part of atomic structure जो बहुत ही direct सवाल है. What do you have to do here? I think you know the answer to this one. Abhinandan, what's up? Lakshya saying D with a lot of confidence. Okay, let's mark what Lakshya is saying right away. And Mayuk, hey, hello Anish, how you doing? How's your health now? Pravat, F. F कहाँ से आ गया भाई? D के बाद F. चलो बढ़िया है. लक्ष्य बार D बोल रहे हैं. And Shivanga Pathavelu Raja. Raja is also saying D. Busudi, Radhika, everyone is saying D. Looks like D must be the answer. But how do you do a question like this? Look, the speed is simply going to be equal to frequency times wavelength. And what is frequency times wavelength? Well, the speed of light. That's what I just said, right? So wavelength निकालनी है. Take the speed of light divided by frequency. As simple as that. 3 into 10 power 8 is unit of meter per second. This unit of per second gets cancelled out. What you're left with is meter. Now, look at this. ये करने के बाद मुझे नंबर 200 के आसपास आता है. How 200? Look, this is 1.36 to 10 power 5, 3 into 10 power 8, right? So, I get that it's approximately somewhere around 200. This is a 15-second way of doing this question. Exact निकालने की जरूरत नहीं है. Order of magnitude has to be correct. Once you get that, the order of magnitude is correct because numbers are all the same, right? इस सवाल में the smart thing you have to do is identify that the question is testing the order of magnitude more than the actual number itself. And that's it. D is the answer. All right. That's great, Raja. That's amazing. I'm from Aakash, Kushal. I work at Aakash BYJU'S NEET YouTube channel. All right, next question. It's great that you're here to revise. Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? देख सकते हैं आप. Ooh, Lyman series, Balmer, Passion, Bracket. But ये बड़ा है क्या? What is the spectrum of hydrogen? See, hydrogen atoms, single electron species, they get excited. They go to a high energy state and then they fall down. When they fall down, they emit some radiation. If that radiation is visible, then which one is it? Now, why will the radiation be visible? Agar if that lies between that 400 to 700 nanometer range, and well, this is a very special range. I think Lyman, Balmer, Passion. So this is n equal to 1, no, not m, n. Balmer must be n equal to 2. This is, this is 3 and 4. I think I'll have to check on these two. But this I know for sure is 1 and 2. So if you remember these calculations, it's a theoretical question. Balmer it is. Shalini, Mayuk, Abhinandan, Shridula, Manpreet, Mayuk, again, Radha, Anita, Provat, and Biswajit. All question of physics. हाँ भाई, you know, Biswajit has said something very interesting. Simple questions हैं. Get marks here and get marks in physics. Physics maybe to same chapter है, modern physics, right? I keep telling students here, chemistry and physics are very interlinked, especially this chapter is when it's thermodynamics. Do thermodynamics properly here, do modern physics / atomic structure, and you're sorted with 4 questions straight away. Yeah, easy peasy. Okay, so Balmer series kya hai when n is equal to 2. Okay, so from whichever, the upper wala n can be anything, but it comes down to n equal to 2, then that is that's Balmer series. Okay, so for a hydrogen atom, there are only 4 lines that do visible spectrum, etc. etc. Rest are UV. UV ultraviolet. Okay. If you want a revision on this part, check out the theory session on this. But the answer to this one is Balmer. Okay, all right, Raja, that's great to hear. Good evening, Mohammad Adil. How are you doing? Hey, AIMS Delhi, Abhinandan. Yeah, I remember you were there in the evening session also, right? Maza aaya tha na? That was a good time pass session. हम लोग बातचीत कर रहे थे, we're just freely talking with you. We can do more of those sessions. If you have some ideas on, hey, you know what, Ashish, do this one. I want to know more about this idea.
I know most of you are about AIMS, but I don't know. We're open to whatever ideas you have to throw at us. Okay, next question. If radius of second Bohr orbit, this is a very, very interesting question. If radius of second Bohr orbit of the He plus ion is 105.8 picometer, what is the radius of the third orbit of Li2 plus ion? Chalo, यहाँ पे you just have to get the radius formula right. Okay. He plus ion is 105.8 picometer. What is the radius of third orbit? So there is some relationship between radius, which is r, n, and z. Somehow these are related, and that is what we've got to figure out, right? If I want to write in terms of maths, r is function of all of these things. Okay, so r is equal to r naught into some sort of a thing. Once you get that, then you can figure this out. Oh, ये तो आपको everyone good evening विकास योगी जी एम्स दिल्ली फीस कोई बोल रहा था ना 12,000 नॉट श्योर डूड अभिनंदन व्हाई यू आस्किंग मी एम्स दिल्ली की फीस यार हाँ यार मोहम्मद आदिल जी थोड़ा गला खराब है अभी भी sort of recovering, but I'm good to take this session right now. Visij is saying C, okay, nanometer. Lakshya is saying D, Shreya is saying D, Abhinandan saying D, Shridula D again. Radhika Mittal is saying D. Oh wow, a lot of D's. Huh? Manpreet is also saying D. Radha again is D. Lakshya again on D. और कोई बोला नहीं सलोनी लक्ष्य फिर से और बुस्सी जी saying D. Looks like answer is D. But how do we get to that answer D? मैंने बताया था कोई रेशियो होता है. N square by Z is that ratio. Tell me, give you a bit of a how to remember this sort of thing. Just remember V is Z by N. So energy is going to be square of that, which is Z square by N square. Equal to मतलब proportional, right? I don't mean equal to. And the third one is radius. ये तीन चीजें आपने याद की and you're done with Bohr, right? Bohr के पूरे सारे numericals हो सकते हैं. And this is R0. Now there are two ways to do this question. One way is the way that I'm telling you right now. The second way is कि चलो He2 plus से He plus ये निकाला, get the value of R0 from here and then put it back into this. I'm going with the easier way where I'm saying कि यार R0 याद ही रख लो क्या फर्क पड़ता है 0.53 angstrom, right? Khair, angstrom, nanometer. Let's see. Angstrom. Yeah, this is correct. Awesome. So now in this, if I substitute this directly, Li का क्या हुआ? N equal to 3. N hydrogen, helium, lithium, boron. N equal to 3. ठीक है? N equal to 3. Sorry, Z equal to 3. And third orbit coincidentally N भी 3 ही है. ठीक है? तो n square by z will be equal to 9 by 3, which is simply 3. तो 3 गुना हो गया 1.587 angstrom. But be careful, don't mark 1.587 as the answer. The answer is in picometers. Angstrom is not in the answer. ठीक है? This is why I think one of you marked C as the answer. Be careful. 1 angstrom is 10 power minus 10 meters, 100 picometers, which is why this is the answer. 159, हाँ, same चीज़ है. Good job. Z equal to 3, Mayur, perfect. Excellent, Abhinandan. All of you are on fire. Next question. You guys are so quick at this. I love it. Okay, next question. What is the maximum wavelength? Badhiya sawal. What is the maximum wavelength of Balmer series of hydrogen spectrum? Balmer series was n equal to 2. ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल समझा जा सकता है. This could be a JEE main question because you've got to do two things here. You have to know that Balmer series n equal to 2, and then what is his minimum wavelength? Maximum, sorry. What is his maximum wavelength concept? Think about it. Maximum wavelength क्या होगा? अच्छा ठीक है. यहाँ बोल रही है श्रेया जी D. What do the rest of you think? Radha is saying A. अच्छा. और बताइए. Maximum wavelength कैसे निकाल रहे? How are you guys figuring this out? Let me give you a small hint. Since there's some divergence on this. Some of you are saying C. Abhinandan is saying C. Radha is saying A again. Shalini is saying D. Okay, that's great. But let me give you some food for thought. Now, maximum wavelength यानी कि minimum energy. अच्छा, minimum energy. देखो, n equal to infinity से n equal to 2 पे गिरेगा, तब मिलेगा तुमको maximum energy. How? Energy proportional to z square by n square, right? Etc. 1 by, एक बाहर निकाल लो, whatever. Z यहाँ निकाल लो, z square निकाल लो, whatever. It's 1 by n square. Could some constant, okay? Let's say assume it's for hydrogen. 1 square and 2 square. Now here, if I put this guy to be infinite, right? That's the maximum energy. तो minimum energy क्या होगी? Minimum energy होगी, अरे just next वाले से ले लो. So take the energy that is falling from, take that to be 3 and take the other energy to be 2, the n value to be 2. That's how you get minimum energy and hence maximum wavelength. That's the funda. That's why I said this could be a JEE main question, right? So I substitute one of the n's to be 3 and the other one to be 2. If you don't remember n1 क्या n2 क्या, it doesn't matter. ठीक है? ऊपर वाला n is 3,
and final, the initial n is 3, the final n is 2. That's what you have to identify. क्योंकि if you take the initial n to be infinite, take extreme case, that will be maximum energy. हमको यहाँ निकालना है minimum energy या फिर maximum wavelength, same ही चीज है, right? So you do this exercise and you get 1 by lambda to be this number, 11 by 72, 10 power 7. Invert that, and this is the answer. Again, this is one of those questions where if you don't have to solve this, I just know that ये around 6 के आसपास कहीं होगा, right? 6 something. And there's only one option that has that 6 number in it. See? That's why I'm saying be smart about solving questions. जब हम लोग सवाल समझते हैं, when we do theory, I teach you things inside out आराम से. But when we do questions, you have to be at the top of your game. Is this okay? Absolutely right, Abhinandan. Yeah, good job, Raja. You've seen this? All right, this from NCRT. That's all right, Basujit. That's okay. Please take care. I hope you're okay. बारिश हो रही है. Where are you at, Basujit? बहुत बारिश हो रही है. Okay, please take care. बारिश तो डरा नहीं है. बैंगलोर में थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, but it's okay. But this सर्दी गर्मी की वजह से everyone is falling sick around. 0.66 micrometer. ये देखो हीरो मयूख जी को. Sure. Next question किया जाए. In hydrogen atom, the de Broglie wavelength, de Broglie is the same thing. French guy, right? Or Dutch, I think. De Broglie, Victor de Broglie, of an electron in the second Bohr orbit is what? अब ये सवाल भाई है हल्का सा twisted. Did you guys follow the last question? I see only Mayuk giving me the answer. Was the last question okay? Mole concept के PYQs में everybody was happy and awesome and amazing. And as we increase the difficulty a little bit, तुम लोग थोड़ा सा डर रहे हो, which is okay, not a problem. No problem. I'm here to help you out. किसी सवाल में question है, then ask me. If you don't ask me any doubt, I'll move on to the next one. That's what we're doing in this question. Okay. Shalini saying B. Shrujala is with C. In hydrogen atom, de Broglie wavelength. एक बात बताओ, ये de Broglie wavelength निकालोगे कैसे? De Broglie wavelength यानी कि lambda equal to h by p. अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई. h की वैल्यू मुझे मालूम है, p कहाँ से आएगा? P is what? P is equal to m into v. अब यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. This seems like it's a little annoying, don't you think so? And वो भी सेकंड बोर ऑर्बिट में हो गया. यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा है. तो क्योंकि वेलोसिटी का कुछ निकालना पड़ेगा ना. क्या था इसका फॉर्मूला? n square by z square नहीं, z by n. नहीं समझ. अरे यार ये ऐसे नहीं करना है. This seems like तो बहुत ज्यादा convoluted way है to find this out, you know, like that. मेरा हाथ तो पहुंच भी नहीं रहा है. This is not how you do this question. This is not how you do this question. Good evening, hard work boy. Yes, look at that. Raja on fire. Sridhara as well. Perfect. You use those two equations. Absolutely right. Let me just read out what the rest of you saying. No problem, hard work boy. It's all right. You have a funky name. Oh, Sandeep. Last में Sandeep वो तो मैं पढ़ना ही भूल गया था. Abhinandan saying L equal to NH by 2 pi. Shalini saying B. Another B right here. Okay, Abhinandan saying B. Sridhara saying B. Okay. Awesome. यही दो इक्वेशन हमको यूज करने हैं. MVR equal to NH by 2 pi and lambda equal to H by P. Because यहाँ पे जो P equal to MV है और यहाँ वाला MV कैंसल हो जाएगा. And then you can relate these chaps over here. And H भी लगता है कैंसल हो जाएगा. चलो देखते हैं. This is why I'm using this equation. I'm justifying to you as to why did I use this equation. देखो, lambda equal to H by P यानी कि MV और MV from this equation is simply N by NH by 2 pi R. ठीक है? But ये R कौन सा है? R N of that second Bohr orbit, because that's what I've got to find out. Now, अच्छा, that formula I need to remember that Rn is N square by Z times R0. ठीक है? और ये मैंने R0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है. Right? I did not write that equation down, but because we just did questions, but it's okay. मैं फिर से लिख देता हूँ. Rn is N square by Z times R0. ठीक है? और R0 मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. बस अब यहाँ से तो हो जाना चाहिए. क्या कर रहे हैं हम? देखो n स्क्वायर, ठीक है, ये चला गया. बचा क्या? ये भी n चला गया. अरे सब नहीं, ये वाला नहीं. ये वाला तो रह रहा है. 2 pi n by z. तो n तो हो गया हमारा 2. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो 4 pi n by z. z क्या था? हाइड्रोजन ही था. हाइड्रोजन था. z इक्वल टू 1. उप्स, ये तो 2 इक्वल टू 1 लग रहा है. z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, है ना? इसको सब्स्टिट्यूट करो. You get 211.6 pi picometers, which means the answer is B. Voice clear नहीं आ रही है, Saloni? Hold on. Let me just check my audio. Voice साफ नहीं आ रही है. That's interesting. अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं, तो I thought कि आवाज आ रही है. आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? Let me also just check on my phone. फोन तो मेरा थोड़ा दूर है. आवाज आ रही है ठीक से? Okay, cool. Maybe Saloni जी आपका इंटरनेट थोड़ा सा बगी है. Maybe that's what the issue is.
Okay, cool, but thanks for pointing it out. Okay, B is the right answer. Question पूछिए Rahul. If it's related to atomic structure, you can ping me right now. If it is a general question, please ping me on I teach Chem on Telegram. ठीक है? Ping me there. I'll try and help you out to my best ability. If you're looking for any Chem things, Chem LibreText is a beautiful place on the internet for most things. If you're looking for a more complex doubt, then you have Chemistry Stack Exchange. That's another amazing site that I refer to whenever I have doubts. These resources. Ping me or check these out. I feel like a doctor prescribing things, right? Khair, I'm not a doctor. I'm just a teacher here. The relation between you guys are doctors, expiring doctors. Bye, Mr. G. Take care, man. All right. The relationship between NM. NM क्या होता है? अच्छा, नाम हम चले गए हैं क्वांटम रेल में. Number of permissible values of magnetic quantum number M for a given value of azimuthal quantum number L is what? अरे ये तो 2023 नीट का सवाल आ गया. नीट तो 2 बार हुआ था ना, अभी 1 बार हुआ था, फिर से मणिपुर के लिए हुआ था. बट दिस इज अ रेगुलर नीट वाला सवाल. इसमें हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर परमिसिबल वैल्यूज एंड एल. ये ध्यान से करने वाला सवाल है. दिस इज वेरी डायरेक्ट बट ऑल्सो यू गॉट टू डू दिस केयरफुली. ओके, ऑल राइट. मेरी आईडी तो आई टीच केम ही है. आई हैव दैट फोटो ऑफ अ सिम्पसन गाय. नो स्पेसेस. हाउ डू आई शो यू दिस गाय हियर? You able to see? That's me. I teach Chem. Khair. C I think. No. Sir, question पूछना है. अरे यार सवाल तो करना है. तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ भी. I am the one who asks questions. I am the one who knocks. Sorry, I was a PJ. Oh, it has to protect my account. What did I do? Anyway. Khair. C I think. Okay. Yes, excellent job. Everyone else was saying C. Because look, the perfect way to do this is for any subshell. It takes values from minus L to plus L. So for a D subshell, it would go this way. For example, right? -2, -1, 0, 1, 2. So for L equal to 2, you have 2L plus 1 different values of NM. Now you take that to the other side and you get this simple expression right over. ये तो थोड़ा extra information है. अगर आप लेना चाहो तो take notes of this. These are different values for all of them. But this is the expression you get. Good job. Excellent. You're all awesome. C. बहुत बढ़िया काम. आने लगा. Awesome. ठीक है. Great. मनप्रीत, प्रोवात, श्रीदुला, शालिनी, अभिनंदन and लक्ष्य, चमका. बहुत बढ़िया. You're from Bombay or what? I have my friends from Bombay taught me the word chamka. Next question. Arrange 4D, 5P, 5F, 6P in decreasing order of their energies. एक और क्वांटम मैक का सवाल. अब सारे सवाल क्वांटम मैक के होने वाले हैं. ठीक है. Try it out. You didn't understand, Sandeep, let me go back there. Just for Sandeep's sake, let's do this एक बार और. देखो, NM equal to 2L plus 1. ये बात समझ में आई? So L is equal to क्या? Just take it to the other side. ये तो 2E लग रहा है. 2L plus 1. Take it to the other side. You get NM minus 1 divided by 2. यही मैंने बस बोला. How 2L plus 1? जब यहाँ पे ये 5 हुए, excuse me, right? It goes from -1, -1 नहीं, पहला वाला हो गया -2, -1, 0, 1 और 2. This is for L equal to 2, d orbital. ठीक है? You good, bro? Till when will you teach this chapter? I'm not teaching right now. I'm just doing PYQs, so I'm guessing it's a half an hour thing, right? Maybe 10 more minutes. Yeah, exactly. N plus rule, Raja. Absolutely right. Hard work, Sandeep. I hope you understood this. Zaki ji, I hope that was all right. Shrishti saying C. आप कहाँ से? हम हैं Bangalore से. Right now, I'm from Allahabad. Lived in Bangalore most of my life. Studied here. Yeah. When you teach this chapter, I'll try to teach this. You want फिर से मैं पढ़ाऊँ क्या इसको? I thought कि मोल कॉन्सेप्ट वो सारे हो गए थे इस चैनल पे. But see, if you want me to do it, please on the comments tell कि भाई आशीष please पढ़ाओ उसके पूरे चैप्टर को. If you say it, we'll do it. Whatever you want, हम लोग करेंगे. ठीक है? A lot of you are saying C. Shrishti Malik is saying C. Saloni is saying C. Raja is saying C. Shalini is saying C. Radhika is saying C as well. And Raja again is saying C. Zaki Khaja ji, if you want me to teach it, on the comment after the video is over, please put it there कि hey Ashish teach the whole chapter. I'll try my best to do that. Kolkata, amazing. Prabhat Pal ji. Okay, 2020 का सवाल. How do you do this? You do this with the idea of N plus L value. अब बहुत वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल होता है, लोग बहुत ऐसा करते हैं ना. मैंने भी पहले स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में ये सब सीखा था. 9th स्टैंडर्ड में हमारे टीचर लोग बहुत
funky. They taught us all this 2s 2p 3s 3p और 3d और ये बना 4s 4p 4d 4f एंड देन बनाओ एरो, बनाते जाओ एरो 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 एरो। ये मत करना लाइफ में, प्लीज डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस, नहीं करना है ये। जेई में नहीं करना है, नीट में नहीं करना है। 9th स्टैंडर्ड में मुझे पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, उनकी मन मर्जी थी, दैट वाज वेरी नाइस। ऑब्वियसली क्वांटम नंबर्स 9th स्टैंडर्ड में कितना ही पढ़ाएंगे, तो जो उन्होंने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है। प्लीज ऑलवेज डू n+l रूल, डोंट डू दिस, ये मत करो, ठीक है। जो भी आपको सिखा रहा है उनको बोलो कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, हम करेंगे n+l रूल से। व्हाट इज n+l रूल? n+l जिसका ज्यादा हुआ उसकी एनर्जी ज्यादा हुई, खत्म खत्म। ओके, इसको हम लोग हटा देते हैं, जो नहीं करना है वो तो मालूम है क्या करना है। अब देखो, आई विल गिव यू द रूल टाई ब्रेकर एज वेल। देखो मेरे सर के ऊपर यहाँ पे n+l सबसे ज्यादा किसका है? 5+3, देन इसका हुआ, फिर देन इस, ठीक है। तो 1 और 2 तो क्लियर हो गए, इसका 7, इसका हो गया 8, इसका हो गया 7। अब इन दोनों में क्या करोगे? अब बोलोगे अरे यार तुमने बोला वो वाला एरो वाला मत करो, एरो तो पक्का था। नहीं, बट ये भी पक्का है। देखो अगर टाई हो रहा है, इफ दे आर बोथ 6, देन व्हाट टेक्स प्रेसिडेंस? It's the n value that takes precedence. If both are same, okay, n takes precedence। बड़ा शब्द लग रहा है, छोटा शब्द आता हूं, n takes priority, ठीक है, n takes priority, hence ये ऑर्डर होगा 5p और फिर 4d। क्लियर हो गया? Is this okay? All right? Is okay? राधिका, मेरे साथ भी यही हुआ था, वही वो 1s वाला। यू मोस्ट वेलकम खाजा जी। Abhinandan is saying C, and I want to say A is the right answer and not C. Yeah, I hope this is okay. Why A is the answer? मैंने explain किया डिटेल में क्यों है A is the right answer. Great that you like it. Okay, n+l rule school में राधिका. Okay, okay, official Suraj. I'm just catching up on the chat. Okay. Yes, Mayuk, perfect bro. Loving this. Option A, option A, option A. Shalini, which part did you not understand? Shalini, मैंने बोला कि n+l रूल में, अरे यार मेरे n बना तो m बन जाता है, मत जोश में n से m बन जाता है। n धीरे धीरे लिखना चाहिए। n+l रूल, जिसका n+l ज्यादा हुआ that will have a higher energy, ठीक है। अगर शालिनी, if you are saying you didn't understand what this diagram that I made, that is off boss principle, ठीक है, but this is a better way of looking at it। n+l अगर जिसका वैल्यू ज्यादा है तो हायर एनर्जी होगी, और n+l किसका सबसे ज्यादा है? 5+3, इसका है 6+2, इसका है 5+1 और इसका है 4+2। ये दोनों सेम है, एंड इन दैट केस दिस वन टेक्स प्रायोरिटी बिकॉज प्रेसिडेंस में बोला था और प्रायोरिटी सेम चीज है, बिकॉज n वैल्यू इज हायर। शालिनी, आई होप दैट इज क्लियर। अविका, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, you are from Bhubaneswar, okay Sandeep, awesome। तो another student here from Bhubaneswar, good job। अरे एम्स भी तो है भुवनेश्वर में, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। एक और सवाल किया, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है, चलो। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स, ये सब बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई। और ऑर्बिटल हैविंग, बस थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, आई एम नॉट लाइंग टू यू। ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। अरे भाई ये सवाल ना, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ऐसे होता है, बट फॉर्मूला नहीं मालूम है तो ना, तो भाई यू विल लाइक टेयर योर हेयर आउट। 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स कैसे होंगे? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सलोनी सेइंग ए, ओके, आई एम लॉकिंग ए फॉर सलोनी। हाँ यार, फॉर्मूला देखो, मैं फॉर्मूला भी सिखाने की कोशिश करता हूं। टोटल नोड्स होगी n-1, ठीक है, ये याद कर लो, टोटल नोड्स। और एंगुलर नोड्स होगी l इज एंगुलर मोमेंटम, नो, सो एंगुलर नोड होगी। बस हो गया ना, है ना। बाकी बचा क्या? बचा क्या? n+l-1 इज वॉट एवर इज द अदर थिंग, इज रेडियल नोड या जो भी बोल लो, ठीक है। इन दोनों को याद रखो, दिस हाउ आई रिमेंबर इट। सबसे आसान है, l इज एंगुलर नोड्स, टोटल नोड इज n-1। अब ये बला, दिस फॉर्मूला इज सो रैंडम, राइट, मतलब ये कहां से आ गया भाई? सबट्रैक्ट करो इसमें से इसको, ये मिल जाता है, कूल। प्लस नहीं होगा, माइनस, हमने भी गलती कर दी, n-l-1, राइट। सो टोटल नोड्स n-1, angular nodes L, radial nodes is this weird formula that you get by subtracting both of these. All right? A lot of you are saying C. A lot of you are saying C. Okay? कौन-कौन बोल रहा है C? देखते हैं। प्रभात C बोल रहा है, शालिनी saying B, राधिका saying C, पूनम is saying C, भयुक C, शालिनी B, अविका C, पूनम 4F. Beautiful. डॉक्टर मनन व्यास जी, भाई नोट्स बनाने पड़ेंगे, रीड तो कर लो, बट देखो हम लोग अभी व्यास जी की टाइम के तो है नहीं कि कोई बोला हम लोग की मेमोरी इतनी कि अच्छी कि समझ गए। इफ दैट वाज द केस देन हमको बुक्स की जरूरत नहीं होती, बट बुक्स पढ़ने के बाद हम लोग नोट्स लिख लेते हैं ना, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो श्रुति इन दिस एज ऑफ कलयुग इज गोना गेट यू ओनली दैट फार, यू गॉट टू राइट इट डाउन। या बहुत अच्छा कि आप लोग सुन रहे हो, बट यू गॉट टू राइट इट डाउन, मेक नोट्स। ओके, डी 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 डी, मैथ्स बाय मैथ्स सेइंग डी,
I think maths is just trolling me, but the answer right here is C. Okay. N plus L रेडियल नोड्स देखो मैंने बताया था रैंडम फॉर्मूला है, एंगुलर नोड्स L है, टोटल नोड्स N -1 है. इसको याद रखो तुम, टोटल एंड एंगुलर. कोई बोला ना फॉर्मूला याद नहीं है, मैं भी आई एम द वर्स्ट एट मेमोरी ब्रो, लाइक मेरी मेमोरी इतनी खराब है ना, आई कांट इवन टेल यू. दैट्स हाउ आई रिमेंबर दिस. इफ आई कैन रिमेंबर इट, you guys are like pros, you're champions, you are doing bio, you have so much to remember and you're doing a beautiful job of it. ये छोटी चीज याद रख सकते हो. Total nodes is N-1, angular nodes is L, radial nodes is L-L-1. ये फंकी सा इमेज है. If you want to know more about all of this, ये जेई का थोड़ा कंटेंट है, बाद में देख लेना, ठीक है. Radial node, angular node, nodes, antinodes and all that. खैर उसका छोड़ो. L equal to 3, N-1 equal to 3, 4F हो गया आंसर. Cool. All right. अरे सुजीत तुम तो चले गए थे यार, बैटरी लो थी. बट वेलकम बैक. लास्ट सवाल है, आई थिंक लास्ट सवाल है. कितने सवाल है इसमें देखने दो एक बार. शायद इसके बाद एक दो सवाल और हैं. एक मुश्किल सा थोड़ा सवाल है, इसके बाद कर लेंगे. 2 सवाल हैं, 3-4 मिनट बाकी, कर लेते हैं यार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? 2018 का सवाल. द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0. अरे यार ये dz² ये कहां से आ गया? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज 0. ये वाला सही लग रहा है मुझे. The electronic configuration of n atom is something. ये वाला अजीब लग रहा है मुझे. An orbital design is designated by 3 quantum numbers, while an electron is designated by 4 quantum numbers. यार 15 सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस बता देता हूँ. ये तो रैंडम लग रहा है ना? ये सडनली उल्टा कैसे हो गया? सारे स्पिन ऊपर थे, सडनली उल्टा हो गया. गलत लग रहा है, पता नहीं, गलत लग रहा है. ये वाला सबसे स्टैंड आउट कर रहा है, और ये वाला आंसर नहीं है, राइट? बिकॉज दिस वन इज करेक्ट. यार ये m dz² एंड ऑल तो बहुत सर के ऊपर चला गया, राइट? व्हाट अबाउट दिस ऑर्बिटल designated by 3 quantum numbers, या n, l and nm, और 4 कहां पे? n, l and m, और m, let me say ml not nm. nm is the number, magnetic quantum number. ये हो गया ml, और s या फिर ms, magnetic spin या फिर spin quantum number, right? So if you need to talk about a perfect this thing, then you talk about, if you want to talk about an electron, you designate by 4 of these. If you want to talk about an orbital, you talk about these 3, right? So these 3 will give me the value of these red things. The electron inside that red thing, देखो इसका हो जाएगा +½ इसका हो जाएगा -½ ठीक है. खैर, if you want me to go through things, arrow of 2pz, okay, cool. The answer is option C, absolutely right. Power is back, Busujit, beautiful. Shalini saying, oh, KTT के पास रहते हो, सही है भाई. KTT तो बहुत बढ़िया कॉलेज है. I have a good friend who studied from KTT. Yeah, no kidding. Shalini Mizaz. Hi, good to see you. Mihaz. Pravat Sengupta ji, सब लोग C बोल रहे हैं. Lakshya also saying C. Awesome. C is the right answer. कि यार ये लग रहा है अजीब और ये wrong statement है. If you want to go into detail, I can do that for you, right? For the first one, m is from -L to +L. But यार ये थोड़ा complicated, right? This is just theory. What are you going to do about it, right? It's just a designation the way it is. कि L equal to -2 is for these chaps right here. Right? For plus or -2, right? This ये थोड़ा अजीब सा बन गया, मैंने गलती से कर दिया इसको. Plus or -2 और या फिर plus or -1 is these guys, dx, y, dz, this thing, dx square, y square, dxy, dz square, m equal to 0. अब यार मैं क्या बोलूँ? This is like a not fair question to ask, because इसका लॉजिक बताना is not possible. You have to go into a lot of math, जो केमिस्ट्री के मास्टर्स में भी पढ़ाया नहीं जाता है. इसका मैथ मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर में मैथ्स में पढ़ाया जाता है. इज देयर इन दिस बुक कॉल्ड एटकिंस, इफ यू वांट टू नो मोर. इसका क्यों है भाई? बट यार है, अभी क्या करूं, या व्हाट डू आई डू, राइट? फॉर द नेक्स्ट वन आई टोल्ड यू, यार दिस इज ओके, दिस वन इजी. इसका होगा s equal to 0. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. आई डोंट थिंक इन नीट ये फॉर्मूला है, बट एनीवे यू नो फॉर श्योर दैट फॉर s इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, ये वाला पार्ट सही है. तो थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया, बट ये आसान कैसे करें? हाउ टू बी this difficult question easy? Because of the third option, it stands out. Hund's rule of maximum multiplicity. मतलब कि until all the electrons are unpaired, they can't, and the spins cannot change. They have to have the same spins throughout. So you've got all these paired up, and then unpaired ones all must have the same spin, either all plus or all minus, right? This is also common in JEE Advanced long back. कि जो है एक all minus correct हो सकता है. नहीं, ये भी सही है, but एक ऊपर एक गलत, especially there are different orbitals, that does not work, right? All right, ये वाला ठीक है? You good? Saloni ping me on Telegram. Yeah, I teach Chem. So that's what I do. Ping me there. Yeah, let's talk about this one right now. ठीक है?
डी वाले में क्या कर रहा है देखो, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, डी आई एक्सप्लेन इन डिटेल। ऑलराइट, सो द आंसर इज सी। वी गुड गाइस, वी गुड वी गुड वी गुड। टॉप 50 रैंक लाने के लिए पार्टी आपकी तरफ से। ब्रो पूनम आ जाओ बैंगलोर, कभी भी पार्टी देंगे। रैंक वैंक तो आते लोगे, रैंक आएगी तो तुम पार्टी दोगे, ठीक है। बट इफ यू वांट अ पार्टी, कम टू बैंगलोर एनी टाइम, कम टू द बाइज ऑफिस, पार्टी ऑन मी। नो जोक्स, you revise your backlog, beautiful Raja. Okay, but yeah, sure Poonam, absolutely. Asashim, last question. I know 9 बज गए, but humor me since you guys are such beautiful students. Interesting सवाल है, interesting सवाल है. The free gaseous, last वाला है, free gaseous chromium atom has 6 unpaired electrons. The reason is half filled s orbital has greater stability. नीट का सेशन ही कैसा हुआ जिसमें असर्शन रीजन नहीं हुआ है ना। एक लास्ट छोटा सवाल करके फिर निकलते हैं हम लोग। वी गुड वी गुड वी गुड। यस लक्ष्य, जयपुर में कहां से? लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। शालिनी भाई क्या मिठाई है वहां पे लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की। मैन आई लव जयपुर फॉर द पराठास एंड द स्वीट्स। गुड इवनिंग पूनम। हे दिस इज अनदर पूनम हियर। यस आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ। पीपल सेइंग ए, लॉट ऑफ यू सेइंग ए। लुक लुक, ध्यान से पढ़ो सवाल, सब लोग ए बोल रहे हैं। पूनम, राधिका, राजा, प्रियांशु, प्रियांशु मोहपात्र, पूनम सिंह जी, सृष्टि, मयूख, लक्ष्य, प्रभात, ऑल सेइंग ए। अब देखो यार, ग्रेशियस क्रोमियम है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखते हैं, देखो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d5 and 4s1. It has 6 unpaired electrons because my friends d5 is really stable. अगर d5 स्टेबल नहीं होता तो ये s ऑर्बिटल आधा हो पूरा हो, क्या फर्क पड़ता है ना। It would not be this way. It would be 3d4 and 4s2. वो आधा filled s may be stable, but that's not the point here, right? That is not the reason for this. And a half filled has greater stability also is not correct. Obviously d5 has more stability, right? Some students may argue कि यार ये तो C हो सकता है, right? I'm sorry, not C, ये B हो सकता है। C is the answer. Reason false है, क्योंकि दोनों सही हैं, but is not the right reason. हाँ, दोनों सही नहीं है। S does not have greater stability than D5. S half is great, but D5 is a lot more stable. Okay? All right? और क्लास मेरे घर से हो रहा है बैंगलोर में, पीछे हरी स्क्रीन है, मैं क्या दिखाऊं तुम लोग को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आर यू गाइस ऑल राइट? Mihaz, I understand why आपने B क्यों बोला, but after my explanation, is this clear why it's C? Yeah. Saloni, for sure, dude. I'll answer your question on Telegram for sure. 2023 question, beautiful. Yeah, I'll just explain to you on Telegram. That's okay, because I don't have the material for it. If I just start writing and scribbling, I feel like I'll waste your time. I don't want to waste your time. That's why I have these beautiful slides for you. मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा सा to the point करता हूँ. But sure, I can help you with that. 24 paper is hard. अरे hard, soft क्या फर्क पड़ता है? तुम prepare करो, सब मजा आएगा। चलो, okay? All right, प्रभात, no problem. केमिस्ट्री का पेपर हार्ड हो या आसान हो क्या फर्क पड़ता है? हम हैं आपको साथ देने के लिए। यू कीप ट्राइंग, ओके। मेरे घर के बगल में एक सेंटर है, जेपी नगर में। देयर इज अ सेंटर वेरी क्लोज टू अ प्लेस कॉल्ड कॉर्नर हाउस, ब्यूटीफुल आइसक्रीम पार्लर, उसके बगल में आकाश का सेंटर है। खैर, ओके, वी आर डन विद दिस स्लाइड शो एंड आज का शो अब यहां हुआ खत्म। हम लोग मिलते हैं कल फॉर अ कपल ऑफ सेशंस, unless I fall sick. I'm kidding. I really hope I don't. I want to meet you guys tomorrow. Okay, bye. मुझे तो बहुत मजा आया as always. ये PYQ सेशन में तो एक्स्ट्रा मजा आता है। चलो, bye all. Good night. I hope you liked it. If you want me to teach theory on some of the topics like mole concept, atomic structure, please give me comments. I'm going ahead from what was already done, assuming कि वो part was okay for you guys. If you want me to teach that theory, physical chem का पहले वाला 11th 12th का, comments में please डालो. I'll try my best to do that, deliver. Okay. All right. Bye. Good night, everyone. Have a fascinating and amazing weekend. कल मिलते हैं. Bye.